In this video, we will study about graphical representation of motion. Why we are studying motion through graphs? Because graphs provide a convenient way to represent the basic information related to the motion in a better way. We can represent motion through two types of graphs. First is distance time graph and second is velocity time graph. In this video, we will study about distance time graphs. Now, what is distance time graph? The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph. Means जब हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ साथ तो उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. In this graph, time is taken along x-axis and distance is taken along y-axis. This is very important point. The slope of distance time graph gives the speed. Means distance time graph can be used to determine the speed of an object. Slope को हम further discuss करेंगे डिटेल में. Now case first, when the body is at rest. In this graph, we have taken time along x-axis and distance along y-axis. Now suppose the object is at 10 meters. Now we will record the time and see whether the object will move some distance or not. At 1 second, the object is still standing at 10 meters. Same at 2 seconds. Same is the case with the 3 second. And same at 4 seconds. Means the object hasn't traveled any distance while the time goes on increasing. So, the graph is a straight line. When the body is at rest, we obtain a straight line parallel to the time axis और x-axis के parallel हमें graph की line मिली है. Now, case 2. When the body is in uniform motion. This is a table. At 1 second, object travels a distance of 10 meters. At 2 seconds, it travels 20 meters. Means at equal interval of time of 1 seconds, the object travels 10 meters each. So the body is in uniform motion. We can conclude this from this table only. Now we will study its graph. Again, time is taken along x-axis and distance is taken along y-axis. Now we are plotting the points 0, 0, 110, 220, 330 and 440. So the graph looks in this way. There are two important points related to this graph. Distance time graph can be used to determine the speed of an object. In next slide, we will determine the speed. And the second point is also when an object travels equal distance in equal interval of time, it moves with uniform speed. Means जब object equal distance travel करता है equal interval of time में तो वो uniform motion में होता है और उसकी speed भी uniform ही होती है. Now in this slide we will study about how to calculate the slope. What is slope? Slope can be calculated by finding the ratio of difference of the y coordinates of 2 points on a line by the difference of x coordinates of the same 2 points. Now we will understand this by an example. Suppose this is a graph and xy axis. This is the graph line and 2 points marked on it. अब हम A point से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे और B point से भी. Now y axis पे जहाँ पे A point और B point के परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स को हम y1 and y2 बोलेंगे because of y axis and the x axis के पॉइंट्स को x1 and x2 because they are x coordinates. So how we will calculate the slope? Slope will be equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Means y axis के दोनों पॉइंट्स
और एक्स एक्सिस के दोनों पॉइंट्स को माइनस करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द स्लोप. Easy. Now in next slide we will calculate the speed of non-uniform motion, uniform motion graph. Now this is the graph for uniform motion. Same, we will draw perpendiculars. अब हम A पॉइंट की लाइन को एक्सटेंड कर देंगे ताकि वो C पॉइंट से मीट हो जाए. इसको हम आगे देखेंगे हमने ऐसा क्यों किया है. इन पॉइंट्स को हमने S2 और S1 मार्क कर दिया है क्योंकि ये डिस्टेंस की एक्सिस पे है, और यहाँ पे T1 and T2 because they are on time axis. Now let's see. From the graph, the speed v of the object can be represented by, speed v कैसे कैलकुलेट हो सकती है. v is equals to s2 minus s1. s2 minus s1 क्यों किया, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स से ये दोनों, एंड t2 minus t1 x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, और हमने इसको इक्वल लिख दिया bc और ac के. ऐसा क्यों किया, देखिए bc जो है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस हो गया. अगर हम A से B पॉइंट तक जाएंगे उस टाइम इंटरवल का, और ये AC हमारा टाइम इंटरवल हो गया जब हम A से B तक गए. सो हमारा स्पीड क्या हो गया, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1. इनकी वैल्यूज देख लेते हैं. S की वैल्यू क्या है 30, S1 की वैल्यू क्या है 20, सिमिलरली T2 is 3 and T1 is 2. And we get the answer as 10 meter per second. Why meter per second? It is the unit of the speed because distance is in meter and time is in seconds. Now we will study our third graph, that is when body is in non-uniform motion. From its table we will clearly understand that the body is in non-uniform motion because equal intervals पे 2 seconds के interval पे बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली चल रही है. 1 मीटर, then 4 meters, then 9 meters, then 16 meters. Okay. Now we'll plot the graph. Time is again taken along x-axis and distance is taken along y-axis. Now we will plot the points one by one. And after joining the points, we will get the graph. So the graph of non-uniform motion is a non-straight line or a curve. The same graph can be plotted for the accelerated motion. अगर non-uniform motion है या हमारा accelerated motion है, दोनों के लिए we can draw the same graphs. Also, अगर हम कोई ऊपर का point ले लें, suppose this point is P and this point is Q. So इस केस में P की स्पीड ज्यादा होगी Q से. क्यों? क्योंकि the slope of P is more than Q. P के xy coordinates ज्यादा हैं Q के xy coordinates से. So the speed of P is more than speed of Q. Okay. Now let's discuss some NCERT questions related to this topic, which are on page number 107 in your book. Now first question. What is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होते हैं? फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए इट इज एनी कर्व. नाउ सेकंड क्वेश्चन. व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस? टाइम एक्सिस के पैरेलल जो हमारा ग्राफ था, जो हमने अभी पीछे देखा था, उसके बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? When the distance time graph is a straight line parallel to the time axis, then the object is at rest because there is no change in the distance at any point of time. इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में किसी भी पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट को देख लीजिए, इस पॉइंट को देख लीजिए, इस पॉइंट को देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पे आपके डिस्टेंस में चेंज नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है. Okay, that's it for today. Thanks for watching. In the next video, we will discuss
velocity time graphs,